Good afternoon, students. I was in phylum Echinodermata in the previous class. You said meaning of echinus, Echinodermata. Perfect Kannada word is Kantaka Charmigalu, means your skin is having spines. If your skin is having spine, we call you as Echinodermata, means directly spiny skinned animals. So best example your book has kept is starfish. Nakshatra Meeno it seems. Called starfish. Most of us have seen this while we visit some of the beaches. वहाँ पे बीच पे ये whitish इतने बड़े starfish पड़े सो रहते, मरे हुए. The dead starfish would be somewhere on the beaches. That if you would have seen, you come under phylum Echinodermata. One more, sea lily. So, two examples are kept there. Please study your morphological characters, इनके salient features. Spiny skinned group of animals के salient features क्या है? These members are exclusively क्या बोलते हैं? Marine. Everybody is found in salt water. Fresh water पे कोई भी नहीं है, जमीन पे भी कोई भी नहीं है. Everybody is in the water. Correct? For that reason I written exclusively marine. Take care that these members have endoskeleton, means skin के नीचे. Very important point. Endoskeleton is made up of calcareous ossicles, round plate जैसे, ऐसे calcareous ossicles. इसके ऊपर से ऐसे spine निकलते बाहर. So this spine will pass through the skin. I have just taken like this. So animals skin is like this. Skin के नीचे this calcareous ossicles और plates से जहां से स्पाइन लाइक का बोले तो पिन लाइक स्ट्रक्चर्स स्किन से पेनिट्रेट होके बाहर आते हैं. देयरफॉर द नेम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल. स्टारफिश, टच इट, यू विल फील द स्पाइन ऑन इट्स बॉडी. बारीक स्पाइन्स. एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ calcareous ossicles. Calcareous ossicles are plates with spines. Good. Therefore, you are Echinodermata. Sir, next, same dialogue. These members, adults are. बोर्ड पे जो लिखे वो adult है. अगर इनके लार्वे देखे तो ये लार्वा है कौन? हमारे स्टारफिश का. अगर ये लार्वा है स्टारफिश का, सो दिस इज बायलैटरल सिमेट्रिकल, बट अडल्ट्स आर रेडियल सिमेट्रिकल. अडल्ट्स आर रेडियल सिमेट्रिकल, लार्वे बायलैटरल सिमेट्रिकल. ठीक. नाउ नेक्स्ट वेरी मोस्ट वैलिड पॉइंट. Triploblastic members, Eucoelomata, okay, we know, मालूम है. But this adult is radial, larva is bilateral, most important point, and endoskeleton is made up of plates with spines. That is second important point. This is also most important. Name the phylum who is exclusively marine. वो ये भी पूछ सकते हैं. बोलना Echinodermata. Next, I am focusing into its inside body. थोड़ा, I will make a color change. You think that इनके body के अंदर के क्या structure हम देख रहे हैं? Just follow this yellow. This is the opening from which water enters into the body. Enter होने पर ऐसे एक ring canal रहता, and these are radial canals रहते ऐसे. All the arms, इसको भी वैसे ही है. That animal also has the same thing. Okay, so water enters through this opening, circulates in this canal, goes into this radial canal.
और ये ईच रेडियल कैनाल के ऑन बोथ द साइड्स minute bubble like structures are there, we call it as tube feet, right sir? ये tube feet क्या करते? Function, sir, what is this system called as and what does this tube feet do? That is the important feature of Echinodermata. इनके अंदर पानी भरे सो रहता, ये बलून जैसे ऐसे स्वेल होते, that will give you internal hydraulic pressure. बॉडी के अंदर दूसरा कुछ भी नहीं है, internal hydraulic pressure is generated by this. Water will circulate through this system and we call it as water transport system. Ambulacral system it is, right? This helps in what, sir? This helps in ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड. आजू बाजू से फूड को खींच के या नीचे माउथ रहता, या स्टारफिश ऐसा है तो माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड, एनस इज ऑन द डॉर्सल साइड. सो दिस सिस्टम सर, वॉट एवर द स्ट्रक्चर्स यू कॉल इट एज what, water canal system, नीचे जो भी है structures, what do you call for the structures as tube feet. Tube feet help in gathering of food. Food आजू बाजू से food खींच के mouth तक लाते. They help in locomotion, they help in gathering of the food, transportation of the food, they help in respiration. अंदर से पानी बाहर, बाहर के पानी अंदर आने से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता, एक्सक्रीशन बॉडी के वेस्ट भी बाहर निकालते. So such a system these members have. You should note this. Okay, your NCERT has mentioned these things. These members possess water vascular system, also known as ambulacral system. Correct? This water vascular system, it possess ring canal, जो सेंट्रल में येलो में लिखा गया है रिंग कैनाल, एंड रेडियल कैनाल विथ ट्यूब feet. Most important point of this animal, so we call it as tube feet. This is called as radial canal. The center wala is ring canal. So ring canal and radial canal with 2 feet make your water vascular system. Okay, so once again, these members possess water vascular system, ambulacral system, which possess ring canal and radial canal with the tube feet. This help the animal in what? Transport food और गैदर फूड, फूड को खींचने में गैदर द फूड, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन. बस हो गया. ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एकोडर्मेटा इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन. व्हाट? वाटर vascular system. Done, dear? If you look at this animal's brain is not there. Correct? If you look at this animal's head is also not there. चुप, एक नर्व रिंग है, इसके बाजू ही एक नर्व का एक रिंग है, रेडियल नर्व्स आर देयर. जैसे जैसे सिस्टम है उस सिस्टम पे ही नर्व सेल है. ब्रेन नहीं है, आंख नहीं है, हेड नहीं है, हार्ट भी नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जहां जहां कुछ ब्लड फ्लो होता है. सो मीन्स यू कैन कॉल दिस एनिमल एज हेडलेस, हार्टलेस, ब्रेनलेस एनिमल्स. तेरी की वी कॉल दिस मेंबर्स एज हेडलेस, हार्टलेस एंड ब्रेनलेस एनिमल्स. क्या बोलना, तुम्हारे जिंदगी भी एकाइनोडर्मेटा, बिना आंख, बिना मुंडी. हाउ विल यू लिव? कम्युनिकेशन. हेडलेस, हार्टलेस, ब्रेनलेस एनिमल्स. सो नाउ वेयर इज माउथ? माउथ इज ऑन दी वेंट्रल साइड, एनस इज ऑन दी डॉर्सल साइड. Mouth is on the ventral,
and anus is on the dorsal side. Okay, so now last, reproduction. Members, you are unisexual or bisexual? These are unisexual. Male and female are separate. Members are unisexuals. आपके फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. Male will release the gamete, sperm, when female will first release the eggs. So body के बाहर gametes will be released and fertilization occurs outside the body. We call it as external fertilization. Fertilization is external. Development is indirect. Development is indirect means with a larval stage. With the larval stage. Development is indirect with a larval stage. Okay, so we completed very important parts of NCERT's prescribed points on echinodermata. So please don't forget water vascular canal. Before this you said endoskeleton is made up of calcareous ossicle with spines. Before that you said members are exclusively marine. Adults are radial symmetry. Larva is bilateral symmetry. Examples. Starfish. Scientific name Asterias. Starfish Asterias. Sea lily, scientific name Antedon. Sea lily, Antedon. Ophiura, scientific name, I have kept scientific name in bracket, let it be in the bracket, brittle star. Brittle star. Ophiura. Brittle star, Ophiura. Cucumeria. C. Cucumber. Cucumeria. C. Cucumber. Echinus. Last. Sea urchin. अरे यार serious. Commonly called sea urchin. Actually scientific names should not be in the bracket. Common names को bracket रखना चाहिए था. I made a mistake. Never mind. Now whoever bracket alla, they are all scientific names. Ophiura, brittle star. Sea cucumber is scientifically known as Cucumeria. Echinus, scientific name commonly called as sea urchin. Right? So bracket are all scientific names. NCERT में है, relax, cool. Echinus, Cucumeria, Ophiura, Asterias, Antedon. 5 examples. Done. I guess now we'll go for next small phylum, Hemichordate. I am waiting यार, बस हो गया है, ना invertebrates. Vertebrates जाता तो कुछ मजा आता. Aves, birds, mammals, reptiles. This is just unseen creatures. Most of them I have not seen. Fishes, हाँ सर, खाए. देखने की बात दूर, खाए भी. Chicken तो रोज खाते. बकरा, Sunday को special biryani. Who? Mammalia. That will study very nice. This is an invertebrate phylum. What to do? Means in Kannada, what do we call for this? Kashyaraka. Okay, vertebrates are called as Kashyaraka, it seems. Have you heard? Kashyaraka, I don't know. For Kannada, medium people, it is Kashyaraka, means without the backbones. Number 10. Phylum. Hemichordata. Phylum
हेमिकॉर्डेटा। 10th लास्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट, बिना बैकबोन वाले लास्ट फाइलम. This hemichordata includes smallest phylum. Very few groups of members are there. With worm-like, smallest phylum, worm-like, like earthworm idanga. They are like earthworm. Earthworm erevulu. Correct, na? Ha. Smallest phylum, worm-like marine creatures. Again exclusively marine, salt water creatures, exclusively marine creatures. Let me take an example. I'll write a Belanoglossus. Yes, done. Gills. Hepatic CK, digestive structures. Yes. Bus. This worm is called as Belanoglossus. Belanoglossus. Your book has only given two examples. One more example is Saccoglossus. Belanoglossus, Saccoglossus. Smallest phylum, worm-like marine creatures. Yes, sir. These members were actually earlier placed under chordata. पहले सब इसको धूमधाम से chordata में बिठाया गया था. They thought इसको notochord है, इसको vertebral column है, इसमें backbone बनेगा. No, earlier it was placed under chordata because एक कॉलर रीजन में ये फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विल टेल. ये इसको बोलते हैं प्रबासिस, इसको बोलते हैं कॉलर, इसको बोलते हैं ट्रंक. कॉलर में एक स्ट्रक्चर है दिस. साइंटिस्ट थॉट इट इज नोटोकॉर्ड. सो जिसको भी नोटोकॉर्ड है वो बैकबोन कल बनेगा ही, सो इसको वर्टिब्रेट में रख लेंगे. बट गलती से बाद में पता चला कि दिस इज नॉट अ नोटोकॉर्ड, इट इज अ स्टोमाकॉर्ड. मीन्स बकल डाइवर्टिकुलम. ये जैसे आपके फैरिंग्स है, देखो कुछ लोगों को ऐसे प्रोट्रूड रहता फैरिंग्स. हैव यू सीन? स्वेलिंग विल बी देयर इन द फैरिंग्स. दिस पार्ट फैरिंग्स विल बी स्वेलिंग. जैसे ही इसका बकल कैविटी के प्रोट्रूडेड पार्ट डाइवर्टिकुलम, बकल डाइवर्टिकुलम एक्सटेंशन है. इट इज अ स्टोमाकॉर्ड, इट्स नॉट नोटोकॉर्ड. सो वी मेड करेक्शन and we put it back into invertebrate. Earlier we thought it was vertebrate, right? So earlier this is placed under chordata, but now it is placed in invertebrate phylum. Why, sir? Why means earlier it was placed under chordata, but now it is placed in invertebrate phylum only. Why? Because the collar has buccal diverticulum. फैरिंग्स का थोड़ा प्रोट्रूडेड पार्ट जो निगलने में, फूड निगलते हैं, देखो दिस इज द थ्रोट वेयर फूड यू विल स्वैलो. ये पार्ट थोड़ा स्वेलिंग था. एक स्ट्रक्चर है जिससे इट लुक्स लाइक अ notochord, but it is a stomachord. We thought it's a buccal diverticulum.
See, the collar has a buccal diverticulum, which is a stomacord, and not notochord. Why it is put back in invertebrata? Because the collar which is having a buccal diverticulum, it is a stomacord. The collar which is having buccal diverticulum, it is not a notochord. Correct? We thought it is a notochord, but actually it is a stomacord. Okay? What is stomacord means? A buccal सा diverticulum part. Buccal cavity के ऐसे थोड़ा आगे आया हुआ part है. बस. Now body distinguished into how many parts? Into 3 parts. Number 1. This is called as proboscis. Body distinguished into 3 parts. Proboscis, collar, and this long trunk. Proboscis, collar, and a longer trunk. Now, what is the function of proboscis? Proboscis gathers food. It gathers food, and also proboscis gland, उसमें एक proboscis gland है, minute gland है, वो helps in excretion. Proboscis gathers food, and the proboscis gland help in excretion. Proboscis will gather the food. proboscis के अंदर जो proboscis gland है वो बॉडी से जो वेस्ट बनता है वो बाहर निकलता है. proboscis gland helps in excretion. जैसे आपके बॉडी में किडनी will remove the waste from your blood, इसके बॉडी में से ब्लड के वेस्ट निकालते हमारे proboscis gland. proboscis gland will remove the waste from your body. Who? You. और कॉलर में क्या है? ऑलरेडी वी नो. कॉलर इज हैविंग अ स्टोमाकॉर्ड. कॉलर में जो स्ट्रक्चर है इट्स नॉट अ नोटोकॉर्ड, इट इज जस्ट अ स्टोमाकॉर्ड. नाउ लास्ट, ट्रंक. लॉन्ग ट्रंक. ट्रंक इज वेरी वेरी लॉन्ग. ट्रंक में क्या क्या था सर? ट्रंक में गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, बाहर से अंदर सांसें लेना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना. गिल्स फॉर O2 गिल्स. And here this is hepatic lobules for digestive enzymes. Digestion के लिए stomach का part है. Hepatic lobules for digestion, and a long tail. This is a long tail structure. बस enough. So hepatic lobule, gill, oxygen to take in, give. So digestive system last तक जाता. इस entire lengthy structure could be declared as a tail structure. Over. So now this completed the details of your hemichordata. Sir, what about symmetry? Common sense. Bilateral symmetry. Members are unisexual or bisexual andre? Unisexual. Open type of circulation system is present. Let me complete. So once again dear, these are the smallest phylum among all worm-like marine creatures. Example, Balanoglossus, Saccoglossus, bodied into 3 parts: proboscis, collar, long trunk. Last part appears like a tail, appear like a tail. Gills for respiration, hepatic lobule for digestion. Okay, collar has stomacord, which is not a notochord. Proboscis will help to take the food, and proboscis has a gland called proboscis gland which helps in excretion. इतना काफी था hemichordata. Last, open type of circulatory system. Open type of circulatory system. Next, members are unisexual, members are unisexuals.
Open table circular system, members are unisexuals. Okay, again, fertilization is external, development is indirect. Last two words. Fertilization is external, development is indirect. बोले तो इनके लार्वा बनते. Development is indirect. Bus. Enough is enough. Two examples are already in the board. Belanoglossus, Sacoglossus. Sacoglossus. Saco. Yes, Saco. Thank God. We can start the vertebrates. Finally chordates. 10 फाइलम हो गया इनवर्टिब्रेट के, उसे पहले बेसिस फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन. बाबा फाइलम Chordata. Lucky enough. Phylum Chordata. First, phylum Chordata, rather than classification, Chordata के important कुछ features हैं. Classification तो करो, पढ़ो, but उनके features बहुत important है. First, I'll take an animal chordata, we'll catch hold of a fish. Fish is a perfect chordata. फिश को बैकबोन है? यस? नहीं है? फिश की बॉडी के अंदर बैकबोन है? कांटे मिलते? यस? कांटे मिलते फिश की बॉडी के अंदर? बैकबोन इज देयर. I have taken an chordata animal. हो, सोचो कि एक एनिमल chordata का एनिमल है. जो भी chordata है, फिशेस, फ्रॉग्स, बर्ड्स, स्नेक, रेप्टाइल, man, animal, everybody should have these 5 important fundamental features. ये 5 features 100% whoever has, we will all put them under the group called chordata. Correct? So chordata means notochord, एक stiff flexible rod जैसा. We'll explain. Just enough. एक है इसके mouth, intestine, anus, gill slits, okay, fine. Heart is shown. Now start. Mouth. First important feature. Color. Phylum chordata. Fundamental features. The fundamental features of phylum chordata. Yes, this one written in the yellow. सबसे ऊपर the structure is what? Nervous system. ये anterior बन जाएगा brain, ये posterior बन जाएगा spinal cord. Correct? CC. आगे का portion बन जाएगा क्या? Brain ऐसा. It becomes a brain. Posterior it becomes a spinal cord. So what is this called as? This is called as neurectoderm. Neurectoderm. Right? So first important feature is neuroectoderm, means dorsal
tubular nerve cord. नंबर 1 न्यूरोएक्टोडर्म. उस स्ट्रक्चर को न्यूरोएक्टोडर्म बोलते हैं. सर उसमें क्या है बोले तो इट इज नथिंग बट डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड which becomes क्या which becomes anteriorly it becomes brain and posteriorly it becomes spinal cord. Yes sir, done. हमारे को भी वही है देखो. But your brain is covered by a skull. That's true. But body animal, I am on a dorsal view. Make me to lie down like this. सबसे ऊपर dorsal tubular nerve cord only is there. ये आगे चल के क्या बनेगा? Brain. This will become spinal cord. This is the first feature of chordata. Sir, invertebrate में example cockroach में nervous system कहाँ था? Means nervous system is on the ventral side. Check cockroach, check prawns. Go and take the mollusca. Echinodermata, उसको तो सिर्फ nerves है. Every invertebrate members have where? On the ventral side. Nervous system will be in the ventral side. किसको? Invertebrates को. वर्टिब्रेट्स को, कॉर्डेटा को नर्वस सिस्टम कहाँ रहता? डॉर्सल साइड में रहता. करेक्ट है? अंडरस्टैंड इट. उनको वेंट्रल साइड, कॉर्डेटा वालों को डॉर्सल साइड. करेक्ट डियर? यस. नंबर 2 posteriorly spinal cord. Just below that, very next, notochord. Just below that, notochord. Straight up. This is number 2. Chorda dorsalis. Number 2. Chorda dorsalis. Wait. Notochord. Notochord. Number 2 is called, biological term it is, chorda dorsalis. Normal term we write it as in simple word, notochord. Chorda dorsalis. Chorda dorsalis is nothing but notochord. Sir, ये chorda dorsalis क्या था? It is a stiff, flexible, rod-like structure. Stiff, flexible, rod-like structure. Stiff, flexible, rod-like structure, which is going to be replaced. अब तो ये स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, बाद में जाके क्या बनेगा? रिप्लेस्ड विथ बोनी और कार्टिलेज एंडोस्केलेटन. ये जाके बनेगा हमारा बैकबोन. एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बोन्स? यस. हु? chorda dorsalis. This becomes your body skeletal system. This will lock your nervous system. You check ना, बैकबोन जो है ऐसे ऐसे बोन्स है, उसके बीच में क्या गया है? स्पाइनल कॉर्ड गया है. बाहर चेक करो, क्या है? स्कल है. स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन है. ये सब बैकबोन बनेगा आपको. बैकबोन इज बिलो योर नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड ऊपर है, उसके नीचे आपका बैकबोन है. करेक्ट? So look. This is your skull. This is your skull. The person's skull is like this. Hope his eyes are like this. I made now. This is his vertebral column. This is vertebral column like this. उसके बीच में you see ना, here it is surrounding your brain and this is locking your what? Spinal cord. तो ये ऊपर हो गया, ये उसके नीचे आ गया. बट यहाँ पे उल्टा हुआ.
ये अंदर गया, योर स्केल बाहर आया, बिकॉज योर ब्रेन शुड बी प्रोटेक्टेड. सो नर्वस सिस्टम इज ऑन द टॉप. हु? न्यूरेक्टोडर्म. येलो कलर इज न्यूरेक्टोडर्म. नीचे नीचे उसके नीचे कौन? नोटोकॉर्ड. कॉर्डा डॉर्सालिस. योर वर्टेब्रल कॉलम के अंदर नर्व कॉर्ड लॉक है. ओके, सो दिस इज योर फंडामेंटल फीचर ऑफ होम vertebrates. Vertebrates means chordates. Fundamental features of chordates. क्या बोले आप? Notochord is stiff, flexible, rod-like structure, replaced with a bony अथवा cartilaginous endoskeleton. Right? Everybody need not have a bony endoskeleton. Everybody need not have a bony endoskeleton. They will be also having a cartilage वाला endoskeleton. Next. ये देखो, ये माउथ है, ये आपके फैरिंग्स है. फैरिंग्स पे कुछ ओपनिंग्स है. अर्लियर ये ओपनिंग से क्या होता था? गैसेस यूज्ड टू गेट एक्सचेंज, सो इट बिकम्स अ गिल स्लिट्स. किसके मीन्स ये जो प्रिमिटिव मच्छी है देखो, मेंबर्स ऑफ दी वर्टिब्रेट्स, मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, मेंबर्स ऑफ मोलस्का, ये सब क्या है? गिल के स्ट्रक्चर्स है. वो गिल के स्ट्रक्चर्स वर्टिब्रेट को भी आ गए. कहाँ पे? फेरेंस में. बट दे विल बी क्लोज्ड. बाद में वो क्लोज होते हैं. बट गिल जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स, ओपनिंग्स आर देयर इन योर फेरिंग्स, दे विल बी क्लोज्ड. ये सब जब होंगे मीन्स when we were in the embryo stage. All these features are present in our embryo stage. All these features are present in your embryonic stage. So this is number 3. Third important feature of your vertebrates, chordates. What is the third one? First one, second one, third one. Pharynx में pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits. Pharynx में गिल्स के कुछ ओपनिंग है जहां से हमारे पूर्वज आर्थ्रोपोडा मोलस्का सब ब्रीदिंग करते थे. अब वो भी फीचर कॉर्डेटा में दिखाई दे रहा है. कब? एम्ब्रियो स्टेज पे. ओके, एम्ब्रियो स्टेज पे नर्व कॉर्ड. जब जैसे हम अडल्ट बच्चा बनते, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड. जैसे एम्ब्रियो बिकम्स एन baby, that time this will become a vertebral column. Pharynx में gill slits which will present a disappear. It will become disappeared. So if you see this in the embryonic stage, please call this animal as chordata. Pharyngeal gill slits in embryo stage. Okay, so in aquatic members that will function like a gills. For us that will get disappeared. Don't get tense for that. In the embryonic stages only. Number 4. So what is number 4? Heart. Where is heart? Ventral side. Correct? Cockroach, dorsal side. इन्वर्टिब्रेट को डॉर्सल साइड हार्ट, कॉर्डेटा को वेंट्रल साइड हार्ट, इन्वर्टिब्रेट को नर्व इज वेंट्रल साइड, कॉर्डेटा को नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल साइड. उल्टा आ गया था ना, उल्टा. प्लीज आई एम नॉट टॉर्चरिंग यू. कॉर्डेटा, नर्व कॉर्ड डॉर्सल, हार्ट वेंट्रल, इन्वर्टिब्रेट कॉकरोच हार्ट डॉर्सल साइड, नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड. बस यस. एसएलसी सर पावर दिस इज. एसएलसी खत्म करके आए, पीयूसी 1 अम्मा क्या चल रहा है मालूम नहीं पड़ रहा. फुल फीवर, फुल टेंशन. दिस इज पीयूसी 1. SLC श्रीमद रामारमण गोविंद गो. Pharyngeal gill slits in embryonic stages. Heart is
वेंट्रल, 2 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड, कितना भी रहो, हार्ट इज ऑन वेंट्रल साइड, बस लास्ट फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ है, एनस के बाद कंपल्सरी टेल, पोस्ट एनल टेल, post anal tail is present. Hoshamma, 5 fundamental features are over. We'll stop. I want to revise. I want to ask you, just 2 minutes focus. What are the fundamental features of our caudate? Dorsally ऊपर, सबसे ऊपर tubular nerve cord, जो जाके आगे बनेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसके नीचे आपके इंटेस्टाइन के ऊपर, उसके नीचे इंटेस्टाइन के ऊपर, उसके नीचे इंटेस्टाइन के ऊपर, इसके नीचे इंटेस्टाइन के ऊपर, इसके नीचे इंटेस्टाइन के ऊपर. व्हाट इज देयर? वर्टेब्रल कॉलम इज देयर. व्हाट डू यू कॉल फॉर दिस एज नोटोकॉर्ड. दिस बिकम्स अ वर्टेब्रल कॉलम. व्हाट? बैकबोन. इट बिकम्स अ बैकबोन. उसके नीचे what? Pharyngeal gill slits. They were respiratory organs in our past. That is still present in our embryos. That's all. Pharyngeal gill slits. यहाँ. Number 4. Ventral located heart. Number 5. Anus. Mouth है. Intestine के last opening is anus. Post anal tail. Okay. Some conditions tail may not be there. Example, frog. If you ask, sir, come and show where is the tail in the frog. No. For man also, right, sir? चलो tail कहाँ दिखाओ अंदर? Tail नहीं है जनाब, but tail bud तो है. Minute bud is there. Tail did not come. छोटा bud रहता. मुर्गियों में भी beak में tooth के buds रहते. जब embryo stage में tooth के buds रहते. Tooth नहीं बनते. Tooth के buds रहते. Right, that features will be there in all chordates, don't worry. So tail buds are there, tail will not become, for a human also. Now ultimately these are the 5 fundamental features. If I ask you, can you make some more differences between invertebrates and chordata, means tell me. Every chordate is a tissue system level or organ level, tissue level, cellular level. 100% everybody is organ system level. Everybody is organ system level, correct? But invertebrates may be cellular level, tissue level, organ level, organ system level. Next you see, what type of symmetry the chordates have means, everybody is having a bilateral symmetry, everybody is bilateral symmetry. But invertebrates are asymmetrical, bilateral symmetrical, radial symmetrical. Matte barri. Sir, every chordate animal, open type of circulatory system or closed type of? Answer is closed type, right? Every chordata has closed type circulatory system. But invertebrate is open type also, closed type also, for some no circulatory system also. Correct? Correct? Their fertilization is external or internal. Your fertilization is external some members, internal many members. Larva stage is there. Larva stage in frogs and may be there, but rest of the members larva stage is not there. वो सब बातें होती नको. But please remember, only organ system level, different type of system level. Everybody is bilateral symmetrical, their symmetry is different. Everybody is eucoelomate, there acoelomate, pseudocoelomate, eucoelomate. बस ये कुछ आपके जानकारी you should know. Difference between main important क्या, invertebrates and these members called as vertebrates. We call them as vertebrates only. So कल जब आएंगे chordata के groups classification करेंगे, उसके अंदर each studies we will do. So fishes पहले आएंगे, frogs बाद में आएंगे, then. Okay, so we'll stop here. For today we'll be back again next class. Thank you.